we made a video about predictions for the year 2025. Majority of the predictions made in that video were spot on. Around India, we can have certain problems with our neighbors. Unfortunately, there will be certain wars, calamities, etc. You can expect earthquakes and of course the resultant tsunamis as well. Artificial intelligence, AI, will now come to our homes. ये सूर्य का साल है 2026. So identity, leadership and complete control is the main essence of Surya. What are the other predictions for the year 2026? Stock market should rise, gold should definitely rise, metals will rise, copper will definitely rise. Some incurable disease का cure मिल जाएगा, which will be then available to the common man, क्योंकि आरोग्यता के देव सूर्य देव हैं. Wars के कुछ खास solutions आएंगे नहीं. Some kind of leadership change in the world. Unfortunate death of a tall leader. We can see major breakups and misunderstandings in this year. New innovation, AI will be used more thoroughly. Something like we saw last year also, something like a Gen Z protest or something sudden is also possible in the year of Surya. भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है and उनको सूर्यवंशी राजा बोला गया. जब लंका पे विजय उनको पानी थी, उन्होंने पूजा की थी. ऋषि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का उनको पाठ बताया था. मैं उदयपुर गया था तो वहाँ के मेवाड़ के जो राजा हैं, आप उनके महलों में बहुत बड़ा सूर्य का चित्र देखोगे. एंड दैट was in pure gold. They used to have Surya in their Qatar also. They cannot eat anything in the morning till the time they worship Surya. Namaste, Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. If you look back to our video last year, we made a video about predictions for the year 2025 by Dr. Tanay Sitha. Majority of the predictions made in that video were spot on. We spoke about earthquakes and the resulting tsunamis. We spoke about massive layoffs. We also spoke about disasters pertaining to aviation and air travel. And we spoke about some really interesting aspects which you should have a look. This year, we are creating a video on 2026, which is the year of Surya. We have Dr. Tanay Sitha here with us. We want to understand more about this year, how we have to be careful, and what we can use to our strength. So, taking no more time further, Dr. Tanay Sitha, welcome again. नमस्कार. So, Surya की बात करते हैं. Surya as a planet, how it influences a human being. Tell us more about Surya, and I just want you to shed light on the subject. सौम्य सूर्य को इस विश्व की आत्मा भी बोला गया है. सूर्य को विष्णु जी का एक अवतार भी बोला गया है. ऋषि कश्यप और माँ अदिति के पुत्र सूर्यदेव हैं. एंड बेसिकली अपने सोलर सिस्टम में ही इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट and complete control. The gravity pull of Surya is such that all the planets, they revolve around themselves. इसको अगर पर्सनल एक पर्सनालिटी के रूप में अगर देखें तो ही इज़ अ रूलर, किंग्स, लीडरशिप क्वालिटीज़. एट द सेम टाइम अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक चले जाएं, जैसे से फॉर एग्जांपल योर लाइफ, सो देन यू हैव टू सी एवरीथिंग. Basically you have to feel that you yourself are Surya. So everything, maybe your relations, your parents, they all are revolving around you. So identity, leadership and complete control is the main essence of Surya. ये सूर्य का साल है 2026. इसमें विशेष रूप से जो planets काफ़ी effective रहेंगे particularly this year would be moon, chandrama, and also shukra and shani. ये भी एक्टिव रहेंगे. पर्टिकुलरली जो सूर्य के साल के प्रेडिक्शंस का रियल इम्पैक्ट जो है दैट विल कम आफ्टर 12th of August, क्योंकि 12th of August को शायद सूर्य ग्रहण है. सूर्य ग्रहण तक अभी से लेके अगस्त तक आपको अपहीवल्स ऑफ मंगल विल कंटिन्यू. मीन्स वॉर्स के कुछ खास सोल्यूशंस आएंगे नहीं.
और एक पीरियड और आ रहा है 17 फरवरी विच इज़ अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स से लेके 12 अगस्त विच इज़ अ फुल सोलर इक्लिप्स. इस बीच में I feel there can be some kind of leadership change in the world. There can be some maybe unfortunate deaths of a tall leader in the world. So ये एक फेज है जिसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है. दूसरा ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल द टाइम ऑफ सूर्य ग्रहण. 12 अगस्त तक मंगल की चीज़ें जो हैं डिस्टर्बेंसेस इन द वर्ल्ड रहेंगी. But post August 12th, you will see some brilliant news coming around us. Particularly, I feel we can get a cure in medicine क्योंकि आरोग्यता के देव सूर्य देव हैं. मे बी कोई ना कोई मेडिकल रिसर्च में सम इनक्योरेबल डिसीज का क्योर मिल जाएगा विच विल बी देन अवेलेबल टू द कॉमन मैन. इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. न्यू रिसर्च इन मेडिसिन वेरी वेरी बिग चांस दिस ईयर. न्यू इनोवेशन AI maybe will be used more thoroughly in this year. Leaders have to be little careful because there is a possibility of new ideas also emerging. Something like we saw last year also, something like a Gen Z protest or something sudden and unexpected is also possible in the year of Surya. New emerging leaders or new political or new doctrines or new paths can be followed by people at large. So yeah, we have to see what happens. So Surya, in terms of how it impacts a person in terms of their health, what should they also be careful of? Can you shed light on this? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सूर्य, इफ वी सी आवर इंटायर बॉडी, तो सूर्य इज आवर हार्ट एंड हार्ट कंट्रोल्स इंटायर ब्लड फ्लो इन द बॉडी. तो सूर्य का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इफ अ पर्सन हैज इट नेगेटिवली प्लेस्ड इन हिज चार्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्लड प्रेशर, सेकंड इज हार्ट कंडीशंस, एंड थर्ड इज ऑल्सो आई साइट. वीक आई साइट इज वेरी वेरी कई बार तो हम लोगों को देख के बता सकते हैं कि अगर स्पेक्स अगर कोई पहना है तो हल्का सा सूर्य का प्रभाव गलत प्रभाव है. तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दीज फ्रंट्स दिस ईयर. जिनका भी सूर्य इज नॉट वेल प्लेस्ड इन देयर चार्ट. सूर्य ऑल्सो कंट्रोल्स डाइजेशन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व it actually controls the entire liquid and blood flow in the body. So it is also a cause for digestive problems etc. तो सूर्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका निवारण करें लोग. इसके बहुत सारे तरीके हैं टू प्लीज सूर्य. एंड सबसे इजी तरीका सौमिल इज़ नमस्कार. कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर आप डेली सूर्य को सिर्फ नमस्कार करें तो हजारों पीढ़ियों तक आपको कभी भी दरिद्रता नहीं छुएगी. इसका एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में. सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो भी एक अच्छी थेरेपी है. लाल वस्त्र का दान, लाल फूलों का दान, मसूर की दाल का दान, ये भी संडेस को गुड़ का दान, गेहूं का दान, ये बहुत अच्छा होता है. लाल कपड़े का दान बहुत अच्छा होता है. इसमें घृणी सूर्याय नमः इसका मंत्र है. इसका तांत्रिक मंत्र राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः भी है, पर सिंपल में घृणी सूर्याय नमः भी लोग चांट कर सकते हैं. इसकी सबसे अच्छा मंत्र तो आदित्य हृदय स्तोत्र है. एंड सौमिल, वेरी इंटरेस्टिंग, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है एंड उनको सूर्यवंशी राजा बोला गया. जब लंका पे विजय उनको पानी थी तो उन्होंने पूजा की थी और ऋषि ने उनको वहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र का उनको पाठ बताया था. वो भगवान राम ने किया और फिर लंका पे विजय प्राप्त की. सो आदित्य हृदय स्तोत्र इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्तोत्र फॉर सूर्य पूजा. एंड ये नृत्य करने से नॉट ओनली फॉर पीपल हु हैव अ बैड सूर्य, ऑल्सो फॉर पीपल हु हैव गुड सूर्य. ये सारी शक्तियों को हमें प्लीज करना चाहिए और इनको और इम्बाइब करना चाहिए. वी शुड नेवर फियर देम. सो अगर अच्छी तरीके से पूजा करें, डेली सूर्य नमस्कार करें,
योगा में भी देखिए सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, एंड यू कैन डू much more for humanity at large. So, can I ask you one question for everybody who's watching? As a daily routine, when they wake up, what kind of process can they follow to please Surya? Somil, just in the morning wake up and do Surya Namaskar. पर दिल से भी नमस्ते तो आपने किया, पर एक दिल से भी giving him the respect that he deserves as controlling the entire solar system and humanity. This is Surya Namaskar of the yoga No, process. just Surya Namaskar. That's only it. praying. Plain and simple namaste. But एक फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि आई सल्यूट टू यू एंड योर माइटीनेस। वो अगर फीलिंग से आप नमस्कार करें, देखिए एक होता है नॉर्मल नमस्ते, बट दूसरा होता है जब आप किसी एल्डरली को या किसी मित्र को या किसी पर्सन को जब आप दिल से नमस्कार करते हैं, एक अलग भावना आती है। ये सारी शक्तियाँ भाव की भूखी है सौम्य। तो भाव आपका अच्छा हो, दिन में मॉर्निंग टाइम में आप बिल्कुल सूर्य का नमस्कार करें विद दैट पर्टिकुलर थॉट, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। बाकी जल भी चढ़ाते हैं लोग, कॉपर के वेसल का दान भी, सूर्य का दान बहुत अच्छा होता है। तो कॉपर के वेसल में लोग लाल चंदन भी डालते हैं, लाल फूल भी डालते हैं, सिंदूर भी कुछ लोग डालते हैं, एंड सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये प्रथा तो हमारे यहाँ बहुत समय से चली आ रही है। What are the other predictions for the year 2026? We have covered a few, but I want you to go into a little more detail on this. Basically, I feel stock market should rise, gold should definitely rise, metals will rise, copper will definitely rise. You will see some new discoveries also happening, new inventions happening across the world. Leadership crisis will definitely be there, but there is a possibility of strong emergence of a very, very tall leader. Possible in India, also possible in rest of the world. So we can see that, and that can be a very revolutionary and a driving force. At least you will see the start of it. This year is perfect for that. Secondly, सूर्य को जो लोग प्रोफेशंस कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्य का सबसे बड़ा प्रोफेशन इज डॉक्टर्स, सेकंड बहुत बड़ा इज MBA, Yes. बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स आर ऑल सूर्य ड्रिवन पीपल, एंड ऑल्सो इन मेनी रिस्पेक्ट्स लॉ फर्म्स, एंड ऑल्सो यू हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई भी पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड एज अ नेम, Actors, actresses, actors also, influencers. yes, so whoever is identified as a name, jinka naam for name and fame, these people can see a good growth in their careers. You can see good, jinka bhi surya acha placed hai, you can see good promotions, good recognition in work, and you will see generally overall this year should be better. Except for, of course, some leadership change will have certain skirmishes. So when I associate name and fame, to a lot of my clients also, I have seen this, that people have two perceptions towards name fame. Either they get too affected by it, or they are completely at balanced state. What do you think should a person's approach should be for his name and fame this year? कई बार सौमिल, पर्टिकुलरली अब तो चीज़ें आर इम्प्रूविंग इन इंडिया, बट कई बार हम देखते हैं कि किसी लेडी का सूर्य इज़ गुड एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, स्ट्रेस एट्सेट्रा बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग. नाउ व्हाट हैपन्स इज सूर्य, if it is well placed, even numerologically or in the chart, it demands that you be recognized. And it's not as if recognized in a very big scale. Even if suppose you have a good friend circle, suppose you have a circle of say 20 friends, but you are recognized very well in that. So we always suggest to those ladies, because India psyche mein, many of the ladies, they turn to become homemakers and they don't go in for regular work, etc. But agar Surya अच्छा है, तो we always say, even if it is sort of a NGO kind of a work, wherein maybe there is no monetary compensation, but at least your Surya will demand that you be recognized. That is very important. Second,
अगर सूर्य खराब है, आदमी बहुत हाईली एम्बिशियस होगा, बट अगर सूर्य अच्छा है तो ही वुड नो व्हाट स्टेप्स टू टेक टू रीच दोज गोल्स. सो ही विल बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. Correct. सूर्य प्रधान लोगों को अगर आप देखोगे, उनका लिलाट बड़ा होता है, माथे पे एक रेडियंस होती है, उनके चेहरे में एक चमक होती है, एक स्पार्क होती है. यू विल सी अ वेरी गुड twinkle in their eyes also, because as I said, Surya controls eyesight as well. So yeah, ऐसे लोग generally they take both their long-term goals and short-term goals in mind, and then they proceed. They don't go haphazard like a Shani Pradhan. They don't go rags to riches wala. They go in a very calculated. Yes, very interesting point you have said. So recently I was watching someone's podcast as well. So there's something known as earned fame and there is something known as fame. Do you have any opinion on this? No, earned fame by money these days happen a lot. No, that is more related to Shani and Shukra, but that you'll be surprised is very short term. And earned name fame is more long term, and it is more balanced, and it is real. So that's the basic difference. What are some ways we can identify if someone has a very strong Surya? I would not say for that you have to see the kundli where it is placed. अगर वो उच्च का है तो it is very good. स्वगृही है तो very good. लग्न में है very good. But अगर layman terms में करना है तो people born on 1st, 19th, 28th, जिनका total comes to 1 and 10. So they are all people whose destiny is of Surya. That means they have to approach or go towards an area which involves a lot of name, fame, and administrative control, etc. Maybe doctors, or they have to reach there. Now, if the Surya is bad, they have to do all the remedies. ऐसे लोगों के लिए Saumil 12-mukhi Rudraksh is really, really very good. मतलब हमारे कई लोग हैं जो सूर्य का कंठा पहनते हैं, 33 beads of 12-mukhi. 19-mukhi बहुत अच्छा है सूर्य के लिए, क्योंकि एक तो वो दशावतार विष्णु का है, और सूर्य की बेस्ट जो जितनी भी हमारी लॉ फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, दे ऑल गो फॉर द 19-mukhi बिकॉज दे आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड लॉ फर्म. So 19 very, very effective, 12-mukhi very, very effective. 1-mukhi Kajudana, a half moon shape from South India, that is very good for meditative focus. As I said earlier in the podcast, I started by saying कि सूर्य आत्मा है. So in our Shiv Mala, Surya half moon shape wearing with a 5-mukhi mala, Shiv Mala is very, very effective. तो वो भी एक अच्छा है. दूसरी चीज़ एक मैं बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ. कई लोगों का जैसे people, if they help others, not that they expect anything in return, but they don't even get a thank you. तो एक मन में नॉट्स हो जाती हैं, जैसे हार्ट में ऐसा एक जिसे बोलते ना, यू फील सैडन्ड, डिसहार्टन्ड, या डिसहार्टन्ड उसको बोलते ही है हार्टन्ड. सो दैट इज देन योर अनहाटा गेट्स ब्लॉक्ड. Again, 12-mukhi and 19-mukhi is perfect for unblocking that anahata. So it is good for, so that you're more free, you're more at peace. तो ये भी एक सूर्य की बहुत ही identifiable चीज़ है. It's very interesting now that we are going into Rudraksh. I want to know if the year of Surya will change the production of the beads of Surya also. I'm sure इस बार already I have got the feelers that 12-mukhi का production बहुत हुआ है. There are a lot of 12-mukhis which have come, and this I'm seeing almost on a regular basis. और इस बार आप, although you'll be surprised, one more thing, I maybe our people, our audience will find it interesting. शनि सूर्य के पुत्र हैं. यमराज वो भी सूर्य के पुत्र हैं, द गॉड ऑफ डेथ. और यमुना वो सूर्य की पुत्री है. तो रक्षाबंधन यम और यमुना का की स्टोरी है रक्षाबंधन के पीछे. सो इट्स वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दिस कॉस्मोस वाज इवॉल्व्ड एंड द स्टोरीज, mythological stories behind it. It also gives a guidance on how to, maybe conquer death, maybe reduce the malefic effect of Saturn. क्योंकि जैसे शंकर जी की तीसरी आंख जो है,
it is a combination of Surya, Agni, and Moon. So there is a very strong Shiv and Surya connection as well. So definitely, and what we have seen results amongst people with the remedies using Lord Shiva's Rudraksh is really, really commendable. So, through the worship of Lord Shiva, if somebody has a routine of Shiv sadhana, what can they incorporate, or is this enough to please Surya? शंकर जी तो सबसे बड़े देव है, त्रिदेव है. तो प्लीजिंग हिम विल प्लीज ऑल द नवग्रहs एंड एवरीथिंग. अब हमारे यहाँ जो पूजाएं होती हैं इसमें लोग पार्ट ले सकते हैं. अगर हमारा सपोज एक तो मकर संक्रांति इज द डे ऑफ सूर्य, दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन एनी ऑफ द नवग्रह शांति, क्योंकि उसमें सूर्य की पूजा होती. And yeah, they can take advantage. We even have an Akhand Ramayana coming in. अखंड रामायण इज गुड. जितने भी राम भक्त हैं, अगेन सूर्य. एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए, नाउ जैसे मैं उदयपुर गया था तो वहाँ के मेवाड़ के जो राजा हैं, आप उनके महलों में बहुत बड़ा सूर्य का चित्र देखोगे, मतलब एक स्कल्पचर होगा, एंड दैट वाज इन प्योर गोल्ड. They used to have Surya in their Qatar also, and everywhere where they used to go. क्योंकि उनमें एक ट्रेडिशन था कि they cannot eat anything in the morning till the time they worship Surya. तो कई बार suppose it's cloudy and or it's raining and you cannot see the sun, तो वो अपने महल के सूर्य के जो एम्बलम है उसको प्रणाम करके फिर वो अन्न ग्रहण करते. तो सूर्य नमस्कार की हमारी वो जो डेली, मैंने बोला सूर्य को सिर्फ नमन करना है, ये प्रथा हमारे राजाओं में, सूर्यवंशी राजाओं में हजारों सालों से चली आ रही. So, what are the plans for 2026? What is Rudrlife's plans for this year? Already we have started a very, very big exercise on how to energize the Rudrakshas more. You are aware of that. That we are now, already we are continuing on that, but this year we will maybe announce it formally, and although all the SOPs are in place, so everyone, even if a person buys a 5-mukhi from us, will be assured that he gets not only the highest quality, but an energized Rudraksh in a proper technical fashion with 72 hours of energizing. So that is what I want to roll out in Surya Kasal. Also, London was very interesting. We just came back 10 days ago. We were in London, and I was really impressed, Somil. This was the 5th time that Rudra Live was doing once in a year in London. Earlier, we used to do London and Leicester. This time, we did not do Leicester. We were only in Wembley. And I was so surprised, Somil, that about 12 to 15 families, they drove from Leicester. They spent about 5-6 hours with us in Wembley, and they upgraded their combination. So that was a very, nice gesture on their part. Secondly, we were so busy. Friday, Saturday, Sunday was so choker block that we didn't have time even to have a cup of tea or even lunch. And some of our old customers, they bought in vada paos for us and, forced us to have something at least. So yeah, London was pretty busy. So we are now going to go back to London in the summers, maybe around 18th of April, we'll be there. This year, of course, we'll be going to Dubai, Singapore as well, and we will start US this year. That's what our plans are. And of course, in India, we'll be doing a big event in Delhi. Incidentally, we'll close this year with an event in Calcutta very soon. And yeah, we will travel across the country. We will also try to do more focus on research on Rudraksh. Maybe we'll come to know something new on the subject. And continue in our mission to clear myths and doubts surrounding this sacred bead of Lord Shiva. And really overwhelmed with the response that we get from our clients. And the best wealth, the best gift that we can get is when
people come and say कि sir बहुत अच्छा हुआ, things are going very good, and when they upgrade their combination, it's really very that is the real blessings that I feel is of Shiva on us. 2026 में what should a person be careful of and not do? Not do. Very important, Somil. Um, this is actually one should ask this question more. Surya represents very directly father and parents. So no disrespect to elders is very important. Secondly, because as I said earlier, also I started by saying that in this, even moon will play a very important role this year. So trust me, be very careful of breakups and relationships. You can see a lot of problems there. So have more understanding, be more at peace. Postpone the fight for another day. So try to have a good relationship between husband and wife, etc. Because we can see major breakups and misunderstandings here in this year. So one has to be, वो बोलते ना, forewarned is forearmed. And yes, treating elders with respect. And I really urge, and I've seen, Somil, जितने भी परिवार में माता पिता या बुजुर्ग साथ रहते हैं, वो परिवार हमेशा संपन्न रहते हैं. So, yeah, take care of your parents, your grandparents, and get their blessings. This year, one should not disrespect elders at all. That's my mantra. Thank you so much for watching. I hope this video was of use to you, and the next year we all are safe, prosperous, and at peace, and continue on our spiritual journey. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya.